Welcome to Education World, and today we'll discuss 10th CBSE sample paper of chemistry. So देखते हैं जो first questions क्या है. So in the first question for this, so it shows the table shows the electronic structure of four elements. ये जो है four elements दिया गया है और इसका जो electronic configuration ऐसा है. So 2 6 2 8 8 ऐसा. Then the question is from this based on the electronic structure. So identify which element will form covalent bonds with the carbon. तो ये कैसे पता चलेगा जो कौन सा जो एलिमेंट है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा कौन सा आयनिक. सो बेसिकली अगेन इफ यू कुड रिमेंबर जैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने बताया था. सो तो यहाँ पे जो होता है सो बाहर का आइदर टू कंप्लीट द ऑक्टेट स्टेट. तो इसमें क्या होने वाला है आइदर इट विल गेन इलेक्ट्रॉन और टू लूज इलेक्ट्रॉन. तो इसमें जो होता है तो इसका जो ऑक्टेट पूरा करने के लिए जो पी जो एलिमेंट है इसको दो एलिमेंट चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको जो है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा और इसको क्या है एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा. और इस ये जो है पूरा ऑक्टेट पूरा है तो ये इनर्ट है. So basically now this will form. So basically this will form your ionic compound. But if you think about these two, so they can form both as well as the ionic and the covalent bond. तो इसीलिए क्या होता है so ये जो दो कंपाउंड है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड करने वाला है so with carbon. ठीक है. So with the carbon this P and R so they can form covalent bond. Covalent bond with carbon. So the second question is the carbon react with an element in the above table to form several compounds. ठीक है. तो give a suitable reason. तो इसमें जो होता है so basically one carbon it can form with the one element that will give you basically with the element it will give you several compounds. तो वो क्या हो सकता है so basically give the suitable reason. ये क्या होता है जो कार्बन का जो मेन जो है so basically the catenation property और इसीलिए क्या होता है so basically लॉन्ग कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है तो इसीलिए we can have a different compound. So like for example if we think about so this is you see this is a halogen configuration. So we can have different compounds like a CH3Cl, CH2H5Cl. So different compound it can form or whatever the compound. Again this is if you could remember so this is actually the oxygen electronic configuration and this oxygen can also form a compounds with carbon. So basically the hydrocarbon we can form like a methanol, we can have methanol, we can have ethanol. Okay, so all these homologous series we can get from this. So this is basically because of the catenation properties of the carbon. तो इसमें क्या होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन बढ़ जाते हैं और हमारा न्यू कंपाउंड मिल जाता है. So the second question is the diagram below shows the part of periodic table. ये जो है periodic table का part है. So which element would react together to form covalent bond? तो ये जो है यहाँ पे तीन एलिमेंट दिया गया है तो उसका नहीं बताया लेकिन फिर भी जस्ट सिंबॉलिक है. सिंबॉलिक ये दिया गया है Z, Y and W. So इसमें कौन सा कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने वाला है. And again so the second question is between two elements W and Z so which will have a bigger atomic size. तो इसमें हम लोग को जो पता है so basically again you can think about or recollect this like all the non-metal they form covalent bond. Okay, तो नॉन मेटल कौन होता है तो नॉन मेटल ये जो है पीरियोडिक टेबल का जो राइट साइड में होता है वो नॉन मेटल होता है और जनरली जो मेटल होता है सो वो लेफ्ट साइड में जो होता है सो दैट इज मोस्टली मेटालिक कैरेक्टर. लेकिन जो राइट साइड में जो है तो वो नॉन मेटल होता है और नॉन मेटल क्या करते हैं नो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं. So basically here you can say only the
no Z and Y. So basically they would form no covalent bond. Okay. Again, we can write not only the metal that knowledge. You can just again think about this the right side element of the periodic table. So they generally form no, this they generally form a covalent bond. But with the metal they form ionic bond. ठीक है और बिटवीन दिस टू एलिमेंट्स W एंड Z तो इसमें जो बिगर एटॉमिक साइज इसका Q है ठीक है तो बिगर वो क्या पढ़ा था सो बेसिकली इफ यू मूव इन द सेम पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होने वाला है सो बेसिकली साइज और रेडियस सो बेसिकली द रेडियस ओके रेडियस will decrease and in the same group तो इसमें क्या होगा so basically if you go down a group तो उसमें क्या होने वाला है रेडियस इंक्रीज होने वाला है so basically this will increase तो इसमें ये देखना है तो यहाँ पे क्या है ये सेकंड पीरियड में है so basically this is in second period and this is in we are having no fourth period तो क्या है so basically there is a large difference so among the W and Z so W will have the bigger atomic radius okay so let's see the next question क्या है so choose an element from the period 3 of the modern periodic table that matches the description given below in each instance and give reason for your choice okay so these are the so basically we have to find the elements from periodic in the modern periodic table of period no 3 so periodic जो period 3 है उसमें कौन सा एलिमेंट है वो पता कर लेना चाहिए तो उसके बाद ये असल रहेगा जैसे क्या है it has the similar structure like a diamond it has the same valency like a lithium so it has the variable valency and is a member of oxygen family तो ये जो क्वेश्चन है ये आंसर करने के लिए हमको हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो याद रखना जरूरी है जैसे जो पीरियोडिक टेबल जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है तो उसमें जो थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट है वो कौन सा है सोडियम देन वी आर हैविंग मैग्नीशियम ओके देन वी आर हैविंग एल्युमिनियम एंड देन नो सिलिकॉन then we are having no phosphorus, sulfur, and so on. Okay, so now we will see because this is now it will be helpful for us. So now the top of the this is diamond. So this is an indirect question. So it is has a similar structure like a diamond. Diamond कैसे बनता है? So basically this is a electrons of carbon. तो ये जो है so basically carbon का जो ग्रुप है तो ये कार्बन ग्रुप में है. So basically ये जो है the third from the third period the same group so basically carbon का नीचे ये silicon है so silicon का will have the similar properties like a they form like a tetrahedral complex okay for covalent bond and silicon also can form tetrahedral bond basically tetrahedral structure और ये क्या होता है जो पॉलीमराइज होता है बहुत सारे जो डायमंड में जो होता है बेसिकली क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे भी सिलिकॉन ऐसे फॉर्म कर सकते हैं okay so again it has the same valency like lithium जैसे same valency है so lithium कौन सा जो element है so basically this is a group 1 element and period 2 okay so now if you remember so basically lithium and it has the same valency like a sodium is your group 3 element group 1 element and the period 3 ठीक है and then we'll have it has a variable valency and is a member of oxygen family जो oxygen family उसमें क्या होता है so उसमें होता है so basically oxygen sulfur selenium तो वो होता है and बीच में ये क्या होता है nitrogen होता है so basically this is your boron and this is your beryllium तो ये जो है so basically you have to remember the periodic table then only you can have it will be easy for you to answer the question तो इसमें है वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है सो बेसिकली ये जो होता है ऑक्सीजन फैमिली में है ऑक्सीजन फैमिली मतलब यहाँ पे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो 16 में आने वाला है और जो सल्फर जो होता है सल्फर कैसे हमारा सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड ओके कैसे होता है तो ये होता है सो वेरिएबल वैलेंसी होता है
इवन वी कैन हैव H2SO4 H2SO3। तो ये जो होता है बेसिकली सल्फर का जो होता है डिफरेंट वैलेंसी हो सकता है होता है, तो इसीलिए जो एलिमेंट है ये एलिमेंट सल्फर होने वाला है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। And the next questions we are having two questions or option, तो हम डिस्कस करते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। so how many isomers are possible for compounds with a molecular formula C4H10। जो C4H10 ये जो फॉर्मूला है तो इसका कितना आइसोमर पॉसिबल है। तो ये जो है C4H8 सॉरी H8 जो है ये जनरल फॉर्मूला कैसे आएगा। सो बेसिकली दिस विल बी योर CN and H2N ऐसा आने वाला है। सो दिस विल बी आवर जनरल फॉर्मूला, दिस इज एल्केन। ओके, सो वी कैन ड्रॉ दिस द स्ट्रक्चर। तो लेकिन यहाँ पे जो बताया गया हमारे जो सिलेबस में एक्चुअली है ये है स्ट्रक्चरल आइसोमर ओनली है, लेकिन ये जो एल्कीन है ये बहुत सारे आइसोमर हो सकता है। सो बेस्ड ऑन दैट you can say like the question is not actually correct if you say like only the structural isomer, so then we will have 3 isomer, but if it does not mention, so basically we can have 5 total isomer. So total 5 isomer is possible, but only 3 structural isomer is possible. Structural isomer. Total isomer is 5 possible, so we will see all these. Okay, so what are the possible isomers? So first it can, since it is an alkane, it can give you positional isomer, जैसे ये है CH3 CH2 CH double bond CH2, ये है 1 कार्बन में डबल बॉन्ड है, so basically 1 2 3 4. Okay, so now we can have a double bond position in same, so basically this can have CH double bond CH double bond CH3. So this is your 2 isomer, 2 positional isomer. Again we can have the chain isomer, so this is like a CH3 CH sorry C, this will be your double bond CH2। ठीक है, तो ये भी 3 isomer is possible, this is a structural isomer, but this can also form geometrical isomer like a cis trans, it is possible, and the other is it can form like a ring chain isomer. So this is a like we are having this, we can have the cis trans like this, so this is the geometrical, this is I think it is not in your syllabus, so this is now you can get 2. So then it will be 4, and if we have like a ring chain isomer, so basically if you are having cyclobutane, so then also you can get another isomer. So basically 3 and the 2 5. But since I think in your syllabus it is only structural isomer is there, so the correct answer will be the 3. Okay, so then draw the dot structure of the branch chain isomer. So branch chain isomer कहाँ पे है? So basically this is our branch chain isomer. तो इसका जो है so basically the dot structure draw करना है। कैसे dot structure draw करना है तो हमको पता है। So basically this is like a double bond. So we are having 2 electron from carbon, then we are having single bond with the hydrogen. So if you consider like this electron from hydrogen, then we are having again the bond from the carbon, and with the carbon we are having 3 hydrogen like a, this is your structure. So this is dot. So this is your CH3. The same way this is this is you can form a bond by these 2 electrons. Then here again the carbon. So that can form the 3 bonds with the hydrogen. Okay, so this will be your dot structure or this dot structure of the branch chain, और ये क्या होता है जो branch chain का जो dot structure होता है। So the second question is how will you prove that the C4H10 and C4H8 and C5H10 are homologous? तो ये जो पहले देखते हैं क्या होता है। So basically C4H8 and C5H10, तो ये जो है दोनों स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला we can represent by like a CnH2
N ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So now you see the difference, only difference between this C4H8 C5H10. तो इसमें क्या होता है, एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है. तो ये जो CH2 यूनिट डिफरेंस है, बाकी सब ये जो है, so basically the functional group is same. If it is a functional group, so यहाँ पे क्या होने वाला है, with alkene, it is a alkene family, and they are differ only by CH2 unit. तो इसीलिए हम बता सकते हैं. So again, if you think about the mass, so the mass will be also, it will be defined by 14 AMU or atomic mass unit per U. So now the difference between C4H8 and C5H10 दोनों में one CH2 unit का difference है, one the mass difference by 14 AMU, और ये दोनों का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n. तो ऐसा बता सकते हैं. So basically this will give you the logic for whether they are belongs to homologous series or not. So basically they are in homologous series. The second question, the or question. So a carbon compound, this is A having melting point is 156 Kelvin and the boiling point is 351 Kelvin, which are having molecular formula C2H6O, and that is soluble in water in all proportion. So this is a two example. This is important for this, the boiling point and the melting point at the same time. So it is soluble in all proportion in water. ठीक है, तो ये important point है. Then identify A and draw its electron dot structure and give the molecular formula of any two homologous of A. ठीक है, तो ये जो है C2H6O, तो इसमें क्या हो सकता है. So basically this can give you the functional isomer. So basically this is we can have the melting point. If you could remember, तो ये क्या होने वाला है, ये जो इथानॉल का जो melting point है तो वही होने वाला है. So basically C2H5OH. Okay, so this is melting point. और ये क्या है, जो इथानॉल का जो physical properties है, so they are soluble or miscible in all proportion in water. So this is another hint. Okay. And this gives your the compound, and it could be also the ether, but ether का जो boiling point वो होता है वो और भी कम होता है, तो ये हो नहीं सकता. and ether it is not soluble in water in all proportion, तो वो हम exclude कर सकते हैं. और इसका जो formula आने वाला है, so this is your ethanol. Okay, and the electron dot structure again we can do like this. So basically this is your carbon, then we are having carbon, oxygen, and then oxygen it can form the dot with the hydrogen. Basically then we can write like this here to distinguish between this. So these are the structure. So okay, so all has to be in octet state in the compound. So this will be your H, this will be your H, and this will be your H. Okay, so I think now you can count the electrons. So for this electron we are having octet, and hydrogen is also having 2 electrons like a helium configuration, and for oxygen here also it is in 4 and 2 bond pair electrons, so it is in also octet state. Carbon is also octet state. Okay, so this is how the electron dot structure you have to remember. So basically all the atoms should fulfill the octet state. तो उसके बाद जो करेंगे, so basically the molecular formula of any two homologous of A. तो ये जो homologous क्या होता है, so basically the general formula will be same. तो ये जो है general formula CnH, this will have 3NO. Okay, so now you can change this any. So basically if you put n equal to 1, so basically this will be CH3OH. Okay, sorry, this will be your the alcohol is general formula 2n plus 1H. So this will be your
this first member, then second member is C2H5OH, and the third member it will be C3H, in the 7OH. Okay, so this is how, this is now you can see this is your the given compound. The first member will be your methanol, and the third member will be your propanol. Okay, so this is how we can get the homologous series. Basically, all are differed by one CH2 unit, and the general formula of this alcohol will be the same. Okay, so thank you for your kind attention, and I hope it will be helpful for your exam. Good luck for you.